students. Today we are going to start our next unit, that is the database management system. And under that unit we are going to start the chapter 9, that is concept of database management system. Before starting this topic, you should know what is data, what is information, what is database, and after that you will get to know that what is database management system. Generally in your daily life, what is the data? Data is a raw data that is in the form of the facts. Raw data means this is your room. For example, in a simple language, I will take this is your room. But room is made up of with the bricks, with the cement. By using these materials, you have made this room. So the bricks and the cements that are known as the raw data. And after combining the raw data, when we will collect the raw data, and after that collection of the by getting the raw data and by processing that raw data, we will get our information. When you will use the bricks and when you will use the cements, you will collect this and you will make a one. After that you will make one wall, then second wall, then third wall, then fourth wall. Then after that you will get the information by using this raw data that your walls are prepared. When your walls are prepared, after that you will get that your room is prepared. So data is a raw data for doing anything, for any purposes. And when you process the data, then you get the information. And when we collect the information, then our database is created. And when we use that, how to manage this database, how you can when you use any software to manage this database, that is known as the database management software, your database management system. This was your simple life example. Now I will move to the computer language for the database management system. Data is a raw data. For example, data is a raw data. For example, in a database management system, in your topic, in your class, we will use a database that is MS Access. How we can use the MS Access? For example, start all program, then Microsoft Office, and then you start the MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Similarly, you can get access to the MS Access. And what is MS Access? In MS Access, you can store your data in the form of the tables. And what is the data in form of the table? When you have the raw data to make the table complete, and when you enter the data, when you process the data, then you get the information that your table is made. And when you combine all the data, all the tables that you have made when you are combining all the tables, that is known as the database. And MS Access is the management software to manage your database. For example, we have made this table. MS Access के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं. अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा. फॉर एग्जाम्पल, in your mobiles, your contact list is a database. In the contact list, you can store a lot of contacts. And when you store all the information in one file, in one folder, that is known as the database. In MS Access, in MS Access, you can create many tables related to your general life problems. For example, in your school, you are using the DPS software, DPS panel. In DPS panel, there are the many tables related to account office, related to teachers table, related to student information table, related to library tables, related to account table. When you collect all these tables together and they all are combined with each other to get the information which you want, that is known as the database of your DPS school, in which there are each and everything is stored about the school, information of the students, information of the teachers, information of your fee, information of your books issued, and like that many information that is stored in one software that is known as the database management software. Similarly, we will talk about one table in your database. That is a table जो student related information table है. इस table के अंदर we have created the roll number. That is your fields. कि हम जब data store करेंगे तो वो data
कौन से सेल के अंदर कौन सा डेटा सेव होगा। अब इस सेल में, इस पूरे कॉलम के अंदर हमें पता है वी विल नो दैट वी विल स्टोर द रोल नंबर्स. In this we will store the name. In this column we will store the English marks. And in this table we will store the math marks. Now roll number, name, English marks, maths marks, that are known as the fields. That are known as the field. And these are the data which you will store under these fields. And these data is known as the, that is known as the 1 Raj 8435. Then related to the next roll number, here her name is Manju, English marks is 58, maths marks is 68, then third Ranju 6747. So these are all the fields, and these fields, in these fields you are storing the data. So this is known as, that is known, the value of the fields is known as the data. And when you make one complete record, one complete information about one person, that is known as the record. Like फर्स्ट रोल नंबर का नेम ये है, इंग्लिश मार्क्स ये हैं, मैथ्स मार्क्स ये हैं. जब ये पूरी रो हम उठा लेंगे, when we will pick all the complete row, when we will pick all the complete information about the roll number 1, that is known as the records. So I think it is clear to you that what is data, what is record, and what is field. These are known as the field, these values are known as the data, and this one row about one person, complete information about one person, that is known as the records. I think that is clear to you that what is data, what is information, what is database. Now this is a database, and the software in which we have made that who is managing is this database, that is known as the database management software. And the comes that how many types of the database management system are there. There are two types of the database management system, या management files. First is the flat file and next is the relational database management files. This is not a system, management relational database बोल सकते हैं, TBM. relational database और ये है flat files. What is the relational database? Firstly I will tell you what is the flat file. Flat file is that files in which you make in which you are storing the records, you are storing all the information. This one file is known as the flat file. अब मैं इसी से रिलेटेड, ये तो एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, अब एक मैं टीचर्स इंफॉर्मेशन की एक कंप्लीट टेबल तैयार करती हूँ. उसमें लिखूंगी टीचर्स का नेम क्या है, विच सब्जेक्ट ही एंड शी इज टीचिंग, एंड ही इज द टीचर ऑफ विच स्टूडेंट्स. तो इस स्टूडेंट टेबल को मुझे उस टीचर की टेबल के साथ रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको उसको इकट्ठा यूज कर सकती हूँ. we can get our query collectively by combining many tables with each other, so that when all the tables are combining, are linked to each other to find out your query, तो that is known as the relational database. Relational database means जब एक टेबल और दूसरी टेबल, मतलब एक डेटाबेस तैयार किया आपने और उस डेटाबेस में there are many tables and all tables are interlinked with each other. उन सभी टेबल्स का आपस में कुछ कनेक्शन है, they are related to each other. आप एक कुछ डेटा फर्स्ट टेबल से पिक कर सकते हो, कुछ डेटा सेकंड टेबल से, कुछ थर्ड टेबल से. when you want to collectively get the data, that is known as the relational database management या relational database file बोलते हैं हम उसको. And second is the flat file. Flat file is the simple file. एक टेबल और दूसरी टेबल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, they are not linked to each other, and if you want to get the data from both the table, it is not easy for you, it's not possible for you because they are not interlinked with each other. So that type of file is known as the flat file. In general life, इन जनरल योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS एक्सेल के अंदर एक फाइल अलग है, दूसरी फाइल अलग है, उनका आपस में कम्बिनेशन नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. अगर आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में से डेटा लेना है, तो मैंने MS एक्सेल के अंदर आपको बताया था कि हमें कुछ पॉइंट्स यूज करने पड़ते हैं. हमें कुछ मतलब वी हैव टू गिव सम फार्मूलाज, वी हैव टू अप्लाई सम फार्मूलाज की शीट 1 में इस सेल से और शीट 2 में इस सेल से या वर्कबुक 1 में यहाँ इस सेल से इस सेल तक डेटा उठाना है, वर्कबुक 2 में इस सेल से इस सेल तक उठाना है, वर्कबुक 3 में उन दोनों को ऐड करना है. देन यू हैव टू यूज सम फार्मूलाज व्हेन यू आर कंबाइनिंग ऑल द फाइल्स विद ईच अदर, एंड दैट इज नोन एज द फ्लैट फाइल बिकॉज देयर इज नो रिलेशन विद वन फाइल एंड द अदर फाइल. In the relational database management system, all the files are interlinked with each other. If you want to get the data, then you have to
linked all these files, and then after that you can get your data. So that is known as the relational database files. So this is all about the database management system. What is data information database, what is relational database files, and what are the flat files. I think this is clear to you. Now the question arises that why we use the database management system. अगर हम पहले फ्लैट फाइल्स यूज करते थे, नाउ वी आर यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस. Why we are using the, what are the advantages of RDBMS, what are the advantages of this relational database management system. These are the advantages of the relational database management system. First is the data availability. When you have store all the data in one folder, in one file, and that is in your PC, and you can mail your file to any person at any time. Your friend need this file, and what will you do? अगर आपने मैनुअली कुछ डेटा तैयार किया है तो मैनुअली उसको वो फाइल लेकर जानी पड़ेगी अगर उसको वो फाइल चाहिए. लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर में वो डाटा तैयार किया, यू हैव मेड योर फाइल्स इन योर सॉफ्टवेयर, इन RDBMS सिस्टम के अंदर यू हैव मेड दैट फाइल, यू कैन मेल दैट फाइल टू योर फ्रेंड. तो डेटा वाले रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, इफ यू वांट दैट डेटा, ही कैन इजीली गेट द डेटा फ्रॉम यू. यू हैव टू मेल, यू कैन मेल इट. सो दैट इज. और ये सॉफ्टवेयर, अगर ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है तो कभी भी वो अपने पीसी पर ऑन करके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, इफ यू आर कलेक्टिवली यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. सो दैट मीन्स इट्स अवेलेबिलिटी इज 24 आवर्स, 7 days 24 hours it's available. Its availability is 24 hours and 7 days. Next is reduced data redundancy. Now what is the reduced data redundancy? Redundancy means duplication. Redundancy means duplication, copying of the data. For example, you are having the two files. वन एक स्टूडेंट फाइल है, एक आपकी हम अकाउंट फाइल लेते हैं, ठीक है. आपके स्कूल का हम डेटा कि हम इनके अंदर आपके स्कूल के एग्जाम्पल लेंगे. सपोज देयर इज अ वन टेबल दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल, एंड देयर इज द सेकेंड टेबल दैट इज नोन एज, दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स मतलब अकाउंट्स इंफॉर्मेशन. अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में भी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड. बट if we will talk about the account information, उसमें भी स्टूडेंट का आईडी नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास, सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, अगर हम रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, तो जो एक टेबल में स्टोर कर दिया वो दूसरी टेबल में दोबारा से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो पहली टेबल, सारी टेबल्स इंटरलिंक्ड है. जब भी हमें दूसरी टेबल को उस डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो पहली टेबल में से उसको पिक कर सकता है. तो इन दैट इज डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है. बारी बारी सेम डेटा को स्टोर नहीं करना पड़ता. इट विल सेव योर टाइम, इट विल सेव योर स्पेस ऑल्सो. So that is the, we need not to duplicacy, we need not to store the duplicate data again and again. Next is the minimize data inconsistency. Inconsistency, consistency means एक जगह जो डेटा पड़ा है वही इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर वैसी ही पड़ी हो. That is consistent data. Suppose मैंने एक जगह हॉस्पिटल, अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में मैंने अपना एड्रेस लिखवाया हुआ है, दैट आई एम रिलेटेड टू RSD कॉलोनी, क्लियर. और फिर स्टूडेंट के बाद जब मेरा टीचर्स टेबल के अंदर माय एड्रेस इज RSD कॉलोनी एंड टीचर्स इंफॉर्मेशन टेबल में, बट अकाउंट ऑफिस में भी मेरा यही है RSD कॉलोनी एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो हमने ये वाला कॉलम एक में ही रख दिया, मेरे एड्रेस का कॉलम. और सपोज अगर दूसरी जगह भी सेम कॉलम रखा हुआ है एंड बोथ आर लिंक टू ईच अदर, अगर मैंने एक जगह चेंज किया, सपोज आई हैव चेंज माई हाउस, I have changed my location now. I am shifted from RSD colony to A block. अगर एक टेबल में चेंज कर दिया तो दूसरी टेबल में भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाना चाहिए. इट मीन्स डाटा इज कंसिस्टेंट. ये नहीं कि एक जगह RSD कॉलोनी एड्रेस पड़ा है और दूसरी जगह A ब्लॉक पड़ा है, ऐसा नहीं होगा. इफ यू विल यूज द रिलेशनल डेटाबेस देन इट विल क्रिएट द डेटा इनकंसिस्टेंट, इट विल क्रिएट द डेटा कंसिस्टेंसी. कि इफ यू आर चेंजिंग या अपडेटिंग इन वन लोकेशन इन वन टेबल, ऑटोमेटिकली दैट डेटा विल बी चेंज इन टू द another location and you need not to worry about this कि एक में चेंज हो गया दूसरे में फाइंड आउट करना पड़ेगा and we have to change the address of that person. So ये फैसिलिटी इसमें है कि you can minimize the data inconsistency नहीं होती इसमें. This is the third advantage of relational database management system. And fourth is enforcement of the data standard. It is using some, it is when it is doing the, when it is putting, when
when the data when this database management system is putting the data that is into some standard formats. वो विल डू इन दिस एम एस एक्सेस प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम डेटाबेस एम एस एक्सेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द टेबल एंड वी आर स्टोरिंग द डेटा इन इट, इट विल आस्क यू कि अगर रोल नंबर में डेटा सेव कर रहे हो तो वो किस टाइप का होगा, नेम में डेटा सेव कर रहे हो तो किस टाइप का होगा, मार्क्स में कर रहे हो तो किस तरह का होगा। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आप फॉलो करोगे, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल यू कैन एंटर योर डेटा इन इट, and again, and if you will move from your standard, then it will show you the error message, and you will get to know that you are doing some mistake. For example, in roll number we are writing the number, तो मैं roll number field को I will create is that is of the number type. When I am using the name, in the name when I am putting the names of the person, I will declare the name type is of the text type. Similarly, English and maths marks I will that is of the number type. तो मैं कुछ standard follow करूँगी, and after following that standard we can create a table in MS Access. So there is enforcement of the data standard. लेकिन जब हम manually data तैयार करते थे, किसी में हमने names को स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिख दिया, मार्क्स के अंदर कभी हम 84 लिख रहे हैं और कभी हम उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं 84, तो फ्लैट फाइल्स वगैरह में जब सिंपली मैनुअली डेटा तैयार करते तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं था, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते थे. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट फॉलोज द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट इज एंश्योर द डेटा सिक्योरिटी. Next is it follows some data security also. When you store the data in these type of the tables, there is the data security. You can apply some password, you can apply some login, or after so that no one can easily access it. And plus you can give some that कि कोई भी पर्सन इसको इजिली एक्सेस नहीं कर सकता. आप उसको प्रोवाइड करोगे कि यू हैव हैविंग द रीड एक्सेस, यू आर हैविंग द राइट एक्सेस, यू आर हैविंग द रीड एंड द राइट एक्सेस बोथ. जिसको रीड एक्सेस दोगे वो सिर्फ डेटा को इसमें से रीड ही कर सकता है, राइट नहीं कर सकता. जिस पर्सन को आप राइट एक्सेस दोगे वो सिर्फ राइट कर सकता है. जिसके पास दोनों एक्सेस होंगे, ओनली दैट पर्सन कैन रीड एंड राइट एंड ही कैन डू सम चेंजेस इन इट. तो वी कैन प्रोवाइड द डेटा सिक्योरिटी टू आवर डेटा बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज द डेटा कंकरेंसी. व्हाट इज द डेटा कंकरेंसी मीन्स कि डेटा कंकरेंट रहता है. अगर हम कहीं चेंजेस करें वी विल गेट टू नो दैट देयर इज नो प्लेस फॉर अदर टू एंटर इन. दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रिजर्वेशन करा रहे हो, आपने रिजर्वेशन किसी भी साइट पर करा रहे हो, दैट साइट इज ओपन बाय मैनी पर्सन्स, और उस साइट की सपोज हमने कोई भी फ्लाइट ले लो, इंडिगो ले लो. इंडिगो, अगर आपने इंडिगो के अंदर अपनी सीट बुक करनी है फ्लाइट में, तो ये नहीं कि एक ही वेबसाइट पे आप बुक कर सकते हो. मैनी अदर वेबसाइट्स आर यूजिंग दिस. यू कैन फिक्स योर यू कैन अपनी सीट को आप फिक्स कर सकते हो, अपनी सीट बुकिंग कर सकते हो किसी भी साइट के थ्रू. अगर एक पर्सन ने एक साइट में सीट बुकिंग कर ली और एक ही सीट फ्री थी और दूसरी जगह भी वो फ्री दिखाएगा और वहाँ भी बुक कर दिया, तो क्लैश हो जाएगा कि एक ही सीट दो पर्सन्स ने बुक कर ली. बट रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, इसके थ्रू डेटा कंकरेंस रहता है. अगर एक जगह दोनों पर्सन सेम टाइम पर ओपन कर रहे हैं और एक ने सीट बुक कर ली, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी जो डिफरेंस है इट विल शो. जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले का बुक कर ली, ये दूसरी जगह उसको दिखा देगा दैट इज फिल्ड नाउ. सो दैट इज द डेटा कंकरेंट रहता है इसके अंदर. ये नहीं एक जगह चेंज हो गई और दूसरी जगह चेंज नहीं हुआ, वहां वो ब्लैंक ही दिखा रहा है दैट द सीट इज बुकिंग इज वैकेंट. Next is backup and recovery management. What is backup and recovery management means? Backup and recovery, you can get the backup of your data. यहाँ पर बहुत सारी facilities हैं कि अगर किसी वजह से लाइट चली गई and there is many crashes in your software, then there are the many management software you can use that it will create the backup of the data, and after resolving your problems you can get your data back. So it is using many recovery and backup procedure. By this it will not harm your data. So this is all about concept of the database management system. That was in your book, that is on the page number 95. We have covered 95, 96 and 97 of your book. Now in the next topic we are moving to relational database management system and the concept of keys. Thank you and have a nice day.